Namaskar friends, welcome to Headlines of the Day. In this video, we are going to discuss major headlines of the Hindu. Before we start, I would say time is always right to do what is right. तो चलिए फिर इसी के साथ आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तमिलनाडु हाउस urges center not to implement language panel report. It is available on page number 1 और ये related है paper 2 government policies and interventions से. In this article, we have to know about the recommendations of the parliamentary committee on official language. How have regional leaders reacted and way ahead. तो दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को कल ही हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है. लिंक आपको पता है कहाँ मिलेगा, राइट? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज Government starts spraying biodecomposer solution in fields as AQI remains poor. It is available on page number 2 और ये related है paper 3 environment section से. In this article we have to know about biodecomposer technology for stubble burning. तो दोस्तों it is developed by Indian Council of Agricultural Research and it has been used by states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and NCT of Delhi. ठीक. Our next important headline is Japan seeks GI tag for Nihonshu, an alcoholic beverage. It is available on page number 6 और ये related है paper 3 intellectual property rights section से. In this article we have to know about geographical indication tag and we have to know about Nihonshu. तो दोस्तों अगर हम GI tag की बात करें तो it is a sign used on products that have specific geographical origin and possesses qualities or a reputation that are due to that origin. ठीक. अगर हम निहोंशु की बात करें दोस्तों तो it is regarded as special and valuable beverage made from fermenting rice and it is an integral part of lifestyle and culture in Japan, right? Our next important headline is Grazing Animals Key to Long-Term Soil Carbon Stability IISC Study. It is available on page number 6 और ये related है paper 3 environment section से. In this article we have to know factors controlling soil organic carbon stability, findings of recent study and its relevance. तो दोस्तों recent study has revealed that grazing animals hold the key to long-term soil carbon stability. अगर हम relevance की बात करें दोस्तों तो soil pool is a reliable sink for trapping carbon and maintaining stable levels of carbon in the soil is therefore key to offsetting the effects of climate change, right? Our next important headline is 6 spider species discovered across the country. It is available on page number 6 और ये related है paper 3 species in news section से. In this article we have to know about new species of spiders from across the country. तो दोस्तों एक बार go through कर लीजिएगा, right? Our next important headline is The Dire Need to Talk About 1962. It is available on page number 8 और ये related है paper 2 international relations से. In this article, we have to know about 1962 India-China War, what lessons need to be learned and future prospects. तो दोस्तों बहुत अच्छे से यहाँ पे explain किया गया है. आप एक बार जरूर go through कर लीजिएगा, ठीक? Our next important headline is Whose Pleasure. It is available on page number 8 और ये related है paper 2 Parliament and State Legislature section से. In this article, we have to know about governors, functions and powers, constitutional provisions, and why there is tussle between governor and ministers, and way ahead. तो दोस्तों इसको हमारी वेबसाइट पे कई बार कवर किया जा चुका है. लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. Our next important headline is Gambia child deaths and cup syrups. It is available on page number 10 और ये related paper 2 health section से. In this article, we have to know what happened in Gambia and what are the toxic chemicals found in samples tested by WHO and ongoing probe. तो दोस्तों इसको भी हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है. लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, राइट? Our next important headline is The Illusion of Being Faster Than Light, How a Star Problem Was Solved. It is available on page number 11 और ये related है paper 3 Science and Technology से. In this article we have to know about black hole, what are the various studies linked to black hole, recent developments and their relevance. तो दोस्तों black hole को भी हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है. बाकी अदर पॉइंट्स के लिए आप यहाँ से go through कर सकते हैं, राइट? अगर हम ओवरव्यू देखें तो ब्लैक होल इज अ प्लेस इन स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल्स सो मच दैट इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट, राइट? एंड द ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज बीन स्क्वीज्ड इनटू अ टीनी स्पेस. अदर थिंग्स देखें तो ब्लैक होल्स कैन बी बिग और स्मॉल, ठीक? बाकी अदर पॉइंट्स आप एक बार यहां से जरूर देख लीजिएगा, ठीक? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज Court cannot issue direction to frame universal civil code. तो दोस्तों it is available on page number 12 और ये related है paper 2 polity and governance से. In this article we have to know about uniform civil code, origins, significance, challenges and way ahead. तो दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है. लिंक आपको पता ही है कहाँ मिलेगा, राइट? ओवरव्यू देखें कि अभी न्यूज में क्यों है तो रिसेंटली यूनियन लॉ मिनिस्ट्री टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज द सोवरेन राइट टू फ्रेम लॉज and no outside authority can issue it a direction to enact a law, right? Our next important headline is
We don't believe in hierarchical world. It is available on page number 13 और ये related paper to international relations से. In this article we have to know about India Africa Defense Dialogue and what are the outcomes of recent dialogue. तो दोस्तों अगर हम India Africa Defense Dialogue की बात करें तो it was institutionalized to be held biannually during successive defense expos and it seeks to build on the existing defense partnership between African countries and India and to explore new areas of convergence for mutual engagements including areas such as capacity building, ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म. दोस्तों इसी पेज पे एक और इंपॉर्टेंट हेडलाइन है, इंडिया यूके फॉर्म जॉइंट ग्रुप टू एनहांस डिफेंस कॉपरेशन. इट इज अवेलेबल ऑन द सेम पेज और ये भी रिलेटेड है पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट इंडिया यूके पार्टनरशिप एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स. तो दोस्तों रिसेंटली डिफेंस इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम इंडिया and UK have decided to create a new defense industry joint working group for more effective cooperation. It is a part of ongoing initiative between the two countries to strengthen the defense and security partnership through industrial collaboration, right? Our next important headline is Supreme Court asks government to develop modules on drug abuse that can render as order. It is available on page number 14 और ये paper 2 health से भी related है और paper 3 internal security से भी इसको link किया जा सकता है. In this article, we have to know about drug menace in India, major reasons for drug abuse, challenges in preventing drug abuse, impacts of drug abuse, and various steps taken, and what more needs to be done in this context. तो दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है. लिंक आपको पता ही है कहाँ मिलेगा. अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड दैट ड्रग अब्यूज हैज ग्रिप्ड द सोसाइटी, राइट? Our next and last important headline is Sri Lankan author Shihan Karunatilka wins Booker Prize for Afterlife Thriller. It is available on page number 15 और ये related है miscellaneous section से. In this article we have to know about Booker Prize. तो दोस्तों it is the world's leading literary award for single work of fiction founded in UK in 1969. It initially rewarded Commonwealth writers and now spans the globe. It is now open to anyone regardless of origin. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. Thanks for listening. For regular updates, you can follow us on various social media platforms.